Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to your YouTube channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss the short questions of solid state physics. Let's begin. एठारे आमे solid state physics रो unit number 2 जाके थिला elementary lattice dynamics and magnetic properties of matter. यूनिट 2 टा दीटा सेक्शन यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू जहाँकि प्रत्येक क्वेश्चन मूल्य 1 नंबर से भाया 55टा क्वेश्चंस को आम डिस्कसन करवा समुदाय यूनिट 2 रो जहाँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस से गुड़ी को ही आम आलोचना को आनी क्वेश्चन नंबर 1 इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक one dimensional lattice the range of k vector values for first Brillouin zone monoatomic one dimensional lattice vibration रे ए k रो वैल्यू टा केते केते भितर रहइबो फर्स्ट Brillouin zone पई k रो वैल्यू -पाई डिवाइडेड बाय a टू +पाई बाय a ऑप्शन नंबर सी -पाई बाय a लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू पाई बाय a. Question number 2 a phonon is emitted or absorbed in elastic scattering of a photon by a crystal inelastic scattering of a photon by a crystal both elastic and non-elastic scattering of a photon by a crystal किंबा none of the above कौन सी नुहे तेणुक गोटे फोनन मुख्यतः आम लाटिस भाइब्रेशन क्षेत्र में लक्ष्य करुचे तो फोनन रो आब्जर्प्शन हो बा इमिशन हो ताहा होचे गोटे इनइलास्टिक स्कैटरिंग से स्कैटरिंग टा इनइलास्टिक स्कैटरिंग बाय ए क्रिस्टल इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ ए फोटन बाय ए क्रिस्टल सॉरी पचार फोनन इज एमिटेड और आब्जर्व किंतु रिलेशन कौन देछि फोटन रे रिलेशन टा कौन माने से सिचुएशन पई जो फोटन टा इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ ए फोटन बाय ए क्रिस्टल ना inelastic scattering of a photon by a crystal and that is inelastic. Question number 3 a phonon is that is a quanta of energy of lattice vibration आम जे फोटोन कहचे क्वांटा ऑफ एनर्जी ये लैटिस वाइब्रेशन क्वांटा ऑफ एनर्जी कौन फोनन क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन होची फोनन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 in case of elastic vibrations in continuous medium elastic vibration continuous medium रे होची if v of g and v of p represent the group velocity and phase velocity respectively group velocity v of g phase velocity पई v of p तबे एगुड़िक मध्यरु केमटी करेक्ट आसीबो इलास्टिक वाइब्रेशन कंटिन्यूअस मीडियम रे ग्रुप वेलोसिटी टा फेज वेलोसिटी संगे समान ऑप्शन नंबर ए group velocity is equal to phase velocity. Question number 5 the knowledge of lattice vibration is useful for providing information about आम lattice vibration knowledge टा पई यूजफुल होची केते बेले कोन इन्फॉर्मेशन आम ता द्वारा हम पाई परचे स्पेसिफिक हीट थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल एक्सपेंशन किबा सब तक विषय हम पाई परचे विशेष करी आमर लैटिस वाइब्रेशन टा स्पेसिफिक हीट को ही सूचाऊँगी स्पेसिफिक हीट उपर ही विशेष भाव में आइडिया प्रदान करुँची ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक हीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन इज बेस्ड ऑन द क्वांटम थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन कर लैटिस वाइब्रेशन थ्योरीटा कहार क्वांटम थ्योरी उपर बेस क्वांटम थ्योरी मुख्यतः आमर प्लांक्स स्क्रूडिंजर देते वेब पैकेट उपर डिराक तांकर देते हेजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आम डिराक पिक्चर लक्ष्य करुचे कौन से गोटे सिस्टम रो केते मात्रा टाइम इवोल्यूशन होची डिराक पिक्चर प्लांक्स जो क्वांटम थ्योरी थिला ताकि आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ लैटिस वाइब्रेशन टा से प्लांक थ्योरी उपर बेस थिला जो एज टा होची प्लांक्स कांस्टेंट ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आसी जा क्वेश्चन नंबर 7 फॉर ए लिनियर डायटोमिक चेन द लॉन्ग वेवलेंथ सैटिस्फाइज अ कंडीशन
गोटे लिनियर डाइएटोमिक चेन पाई एगुड़िक मध्य कमी करेक्ट आसीज k टेंस टू 0 फेज वेलोसिटी टेंस टू इनफिनिटी ग्रुप वेलोसिटी टेंस टू इनफिनिटी एगुड़िक मध्य सबुतक करेक्ट लिनियर डाइएटोमिक चेन पाई k वैल्यूटा मध्य 0 को इंटेंस टेंस टू 0 फेज वेलोसिटी मध्य टेंस टू इनफिनिटी ग्रुप वेलोसिटी मध्य टेंस टू 0 तेणुक ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर D be the correct answer for our question number this. Next question number 8. In acoustic branch, two consecutive atoms displaced in same direction, two consecutive atoms displaced in opposite direction, all the particles are at rest, none of the above. Acoustical branch ପାଇଁ ଦୁଇଟା consecutive atom समान direction रे ही जाउची acoustical branch पे. Option number A, two consecutive atoms displaced in the same direction. Question number 9. As the temperature approaches to 0, the lattice contribution to heat capacity of solid approaches to the temperature टा 0 को approach करची सेही समय तार heat capacity मध्ये 0 को approach करिवो. Option number B. Next, question number 10. Debye theory of heat capacity considers the vibrations of the crystal is डिवाई थ्योरी एगुड़िक मध्य केउटी को दर्शाउसी द भाइब्रेशनल मोशन ऑफ द एटम्स लोकेटेड एट लैटिस पॉइंट्स इंडिपेंडेंट एंड इक्वल ए जायंट मॉलिक्यूल व्हिच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इलास्टिक इन इलास्टिक मीडियम इन नंबर ऑफ मोड्स विथ क्रिस्टल्स आज ए कंटिन्यूअस मीडिया आमर गोटे नंबर ऑफ मोड्स से क्रिस्टल एम पाउचे जोटा गोटे कंटिन्यूअस मीडिया भाया ऑप्शन नंबर डी. Question number 11. A crystal lattice behaves like an elastic continuum for the propagation of waves. It refers to Debye's theory of specific heat, Nadelung and Petit's law, Einstein's theory of specific heat, none of the above. A crystal lattice behaves as an elastic continuum for the propagation of that wave. It refers to the Debye theory of specific heat. Debye theory of specific heat. Question number 12. A dispersion relation links angular frequency omega with wave number सांगे ओमेगा एवं वेव नंबर सांगे जो रिलेशन रही है आम कहे डिस्पर्सन रिलेशन वेव नंबर के वेव नंबर आम के द्वारा रिप्रेजेंट कराऊँ. क्वेश्चन नंबर 13. In case of diatomic lattice at the zero boundary we have in acoustic branch they both heavy as well as light particles are at rest. Both heavy as well as light particles are in motion. Only light particles are at rest. Only heavy particles are at rest. Diatomic lattice at zero boundary पाई गोटे acoustical branch रे light particles are in rest. केवल light particle गुड़ी का rest रोज. Question number 14. When light mass m1 tends to 0, optical branch disappears, having the dispersion relation of a monoatomic lattice. एगुड़ी का मध्य केमिटी करेक्ट आसी जिवो ऑप्टिकल ब्रांच पे. ऑप्टिकल ब्रांच में आम ये गोटे ग्राफ को प्लॉट करूले एक्वास्टिकल ब्रांच ओमेगा -π/a टू k/a. ऑप्शन नंबर डी. इन द हार्मोनिक मॉडल ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस देयर इज नो थर्मल एक्सपेंशन देयर इज थर्मल एक्सपेंशन द हीट कैपेसिटी इज नॉट कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर आइसोथर्मल एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स आर डिफरेंट. हार्मोनिक मॉडल ऑफ लैटिस वाइब्रेशन एगुड़िक मध्य सबुटी साटिस्फाई करुँचे आम कहूँ देयर इज नो थर्मल एक्सपेंशन किसी रोनी. क्वेश्चन नंबर 16. द Debye मॉडल फॉर ए 3-dimensional crystal द इंटरनल एनर्जी यू एट लो टेम्परेचर इंटरनल एनर्जीटा टेम्परेचर सांगे केमती रिलेट करबा कंडीशन कहूँ लो टेम्परेचर तार फोर्थ पावर सांगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ऑप्शन नंबर डी. इंटरनल एनर्जी नॉट स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट थे Debye लॉ और टेम्परेचर थर्ड पावर द इंटरनल एनर्जीटा तार फोर्थ पावर एट लो टेम्परेचर सिचुएशन. Debye constant could be derived from Debye constant को आम केंतु डिराइव करवा स्पेसिफिक हीट इलास्टिक डाटा बोथ द एबव नॉन ऑफ द एबव. Debye constant को स्पेसिफिक हीट डिराइव कर दे परिबा एवं इलास्टिक डाटा मध्ये डिराइव कर दे परिबा तेनु करी बोथ द एबव. यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक हीट एवं इलास्टिक डाटा थ्रू रे आम Debye constant को जान दे परिबा. क्वेश्चन नंबर 18. फोनन्स आर क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ डैश मोशन क्यों मोशन रे फोनन्स आर क्वांटाइज्ड जदि मोशन टा गोटे ऑसिलेटरी मोशन होइथिबो से सिचुएशन रे फोनन्स आर क्वांटाइज्ड.
To calculate the kinetic energy of a travelling neutron by measuring the time taken between the two fixed points where the distance is known, we use the method आम kinetic energy calculate करवा कहार ना गोटे ट्राभेलिंग न्यूट्रन जो न्यूट्रनटा गति करुँच तार काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करवा केमी कैलकुलेट करवा आम मेजरिंग द टाइम टेकन बिटवीन द टू फिक्स पॉइंट्स आम दुईटा पॉइंट नवा दुईटा पॉइंट को फिक्स करवा से दुईटा पॉइंट भितर से जो ट्राभेलिंग न्यूट्रन केते टाइम डिफरेन्सटा रोचे मैंने गोटे पॉइंट रू अन्य पॉइंट गला बेले तार टाइम ड्यूरेशनटा कौन रोचे जो डिस्टेंसटा आमको जना थी तेज से प्रकार मेथड को आम के प्रकार मेथड कहवा पाराबोलिक मेथड टाइम ऑफ हाई मेथड टाइम मेजरमेंट मेथड ना फोनोस्पेक्ट्रम मेथड ऑप्शन नंबर बी टाइम ऑफ हाई मेथड टाइम ऑफ हाई मेथड क्वेश्चन नंबर 20 द पार्टिकल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरैक्शंस ऑफ ए सॉलिड विथ लाइट बिकॉज दे हैव हायर फ्रिक्वेंसीज आर कॉल्ड गोटे पार्टिकलटे रेस्पॉन्सिबल होची सॉलिड कौन गोटे पार्टिकलटे क्या सांगे ना लाइट सांगे तार कारण कौन ना कारणटा हूँ फोटोन ना फोनोन ना आक्वास्टिकल फोनोन ना ऑप्टिकल फोनोन ड्यू टू ऑप्टिकल फोनोन लाइट रिलेटेड टर्म में आम ऑप्टिकल फोनोन को यूज कर ऑप्टिकल फोनोन नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन when the atoms of the lattice vibrate with the same phase and amplitudes about their mean position the particles are said to be acoustical phonon acoustical phonon property जेटा ऑप्टिकल फोनोन कौन आक्वास्टिकल फोनोन कौन तार रिलेटेड ग्राफ आर रिलेटेड क्वेश्चंस को बर्तमान आम डिस्कसन करुचे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 if the velocity of a moving wave is not dependent on the frequency the solid is known as यदि ता वेलोसिटी मुविंग वेवटा नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी उपर डिपेंड करूनी तो से प्रकार सॉलिड को आम कहवा नॉन डिस्पर्सिव क्वेश्चन नंबर 23 आज द टेम्परेचर अप्रोचेस टू जीरो टेम्परेचरटा बर्तमान जीरो को टेन कर द लैटिस कंट्रीब्यूशन टू हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स अप्रोचेस टू जीरो क्वेश्चन रिपीट हो पूर्व गोटे क्वेश्चन आम सिंप्लीफाई करते नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन इन आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड्स द एटम्स आर अज्यूम्ड टू बी आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट जिते आइंस्टाइन तांकर इक्वेशन देते स्पेसिफिक हीट उपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स रिगार्डिंग तेरे से जो आजम्पसन नहीं कौन आजम्पसन थिला ना इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर अनहार्मोनिक ऑसिलेटर कपल्ड ऑसिलेटर नन ऑफ दिस से जो आटम गुडी को से कहते गोटे गोटे इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर दीज एटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर क्वेश्चन नंबर 25 if a phonon of wave vector k vector is observed during the scattering according to wave vector conservation law phonon गोटे तार wave vector k vector से ऑब्जर्व करछि स्कैटरिंग प्रोसेस कारण एवं wave vector conservation law को आम ये यूज कर आम ताको केमिति लिखिबा ना k डैश स्कैटरिंग कारण केते हो ना k इंसिडेंट केते प्लस k वेक्टर प्लस g वेक्टर जिनठारे k एवं k डैश आर इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड wave vector k टा को आम इंसिडेंट k डैश टा को स्कैटर्ड wave vector तबे g टा कोन कहबा g टा कहबा एठे कोन reciprocal lattice vector G is known as reciprocal lattice vector 26 the average number of phonons in a mode of lattice vibration at temperature T तो फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल e टू द पावर h कट ओमेगा डिवाइडेड बाय kBT प्लस 1 ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन in general a system can have how many specific heats generally गोटे सिस्टम केतुटा स्पेसिफिक हीट होची इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट रही परिबो ऑप्शन नंबर सी 28 नंबर क्वेश्चन at low temperature the variation of lattice specific heat cv with a temperature T is given by specific heat at constant volume टा temperature संगे केमिति रिलेटेड लो टेम्परेचर रे तार थर्ड पावर संगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल cv is directly proportional to TQ 29 0 point energy of a solid according to Debye model तार मैथमेटिकल फॉर्मटा था 9/8 RTD टेम्परेचर जेहेतु आम Debye मॉडल को TD टेम्परेचर 9/8 RTD नेक्स्ट 30 द रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन्स टेम्परेचर थीटा ई एंड ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी आइंस्टाइन टेम्परेचर थीटा ई और ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी एफ मध्य कौन रिलेशन HF is equal to theta e into kb HF is equal to h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट f फ्रिक्वेंसी थीटा ई आइंस्टाइन टेम्परेचर kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो आम कहते ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी और आइंस्टाइन टेम्परेचर मध्य रिलेशनटा
क्वेश्चन नंबर 31 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट Debye consider the thermal energy in optical mode whereas Einstein consider the thermal energy in acoustical mode correct नुहे Debye consider thermal energy in acoustical mode thermal energy ना acoustical mode पाई whereas Einstein assume the thermal energy in optical mode okay एटा correct both approximation assume thermal energy in acoustic mode no both approximations assume thermal energy in optic mode no तेणुक Debye कौन देते ना thermal energy टा acoustical mode रे जेनठारे कि आइनस्टाइन कहते आज्यूम करते थर्माल एनर्जीटा ऑप्टिकल मोड पर 32 द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मटेरियल इज जीरो द मटेरियल ये जो आम 31 नंबर प्रीवियस क्वेश्चन लक्ष्य कले 1 ରୁ 31 एटा आमर फास्ट सेशन रहउथला एलिमेंटरी लैटिस वाइब्रेशंस बर्तमान जहाँ आसला मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यूनिट 2 रा सेकंड पार्टा ता रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ा तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मटेरियल इज जीरो द मटेरियल इज सेड टू बी मस्ट बी पैरामैग्नेटिक मस्ट बी फेरोमैग्नेटिक मस्ट बी डायमैग्नेटिक मे बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक पे मैग्नेटिक मोमेंटा जीरो किंतु फेरो पे नुहे मे बी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पे हमरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए मटेरियल इज जीरो नेक्स्ट 33 द स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल इज ए भितर जो मटेरियल गुड़िक गिभेन अच्छी से सब स्ट्रॉन्गेस्ट डायमैग्नेटिक कोटा बिस्मुथ हाइड्रोजन हीलियम नियर बिस्मुथ इफ ए मैग्नेटिक इंडक्शन बी passes normally through a closed coil of cross sectional area A then flux phi can be expressed as phi expression केते आसीबो b dot a b a जेतु नॉर्मली पास करछि b dot a b a cos theta cos 0 degree 1 next Tesla is the SI unit of Tesla कार unit magnetic flux density magnetic flux density ना magnetic flux density ना magnetic susceptibility intensity of magnetization Tesla हमें कहूँ magnetic flux density the unit of magnetic induction unit Weber per meter square magnetic induction a magnetic dipole placed in a uniform magnetic field experiences magnetic dipole को आम कौन से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मध्य रखा से कौन आमको दब गोटे टर्क दब बोथ फोर्स एंड टर्क बोथ फोर्स बट नॉट टर्क ए टर्क बट नो फोर्स नाइदर फोर्स नॉट टर्क ताने टर्क दौर कि फोर्स दौनी ए टर्क बट नो फोर्स 38 नंबर क्वेश्चन द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नेक्स्ट question number 39 the temperature at which a ferromagnetic material changes into a paramagnetic material is known as Curie's temperature जो temperature रे फेरोटा पारा को कन्वर्ट हो जाउछि से टेम्परेचर को आमे कहउछे Curie's temperature ऑप्शन नंबर डी which of the following magnetic substances can have positive permeability and negative susceptibility negative susceptibility means diamagnetic positive permeability approximately आमे कह दे परबे diamagnetic ऑप्शन नंबर सी negative susceptibility means diamagnetic तापरे positive permeability at the same time it will be for diamagnetic ऑप्शन नंबर सी the susceptibility of a diamagnetic material is diamagnetic material पे susceptibility small but negative previously हम जोटा लिखिथिले diamagnetic पे कम किंतु भी negative which of the following has low value for ferrite फेराइट में सब कम कोटा कंडक्टिविटी परमेबिलिटी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नन ऑफ द अबव कंडक्टिविटी सब कम रहिबो फेराइट में पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैरीज आज टेम्परेचर संगे केमिति वैरी करछि पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर संगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड एज तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टा नेगेटिव -n z² r0² μm डिवाइडेड बाय 6m ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सप्रेशन मैथमेटिकल फॉर्म डेरिवेशन कला फाइनली ये पाइबा क्वेश्चन नंबर 45 क्यूरियस लॉटा आम कहचे दैट इज एम इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय टी माइनस थीटा क्यूरिटा टेम्परेचर संगे भैरी कर आज आ गोटे फॉर्म यहाँ परमानेंट डायपोल मोमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एंगुलर मोमेंटा परमानेंट डायपोल मोमेंट आम क्या कहवा माने आ भर कौ एंगुलर मोमेंट
टाको से नौछि ना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर स्पिन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑल ऑफ द अबव। डायपोल मोमेंट कहले परमानेंट डायपोल मोमेंट तामाने से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जीव, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जीव, न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम मध्य जीव, तेणुकरी सब तक ऑल ऑफ द अबव। तो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गिव्स गोटे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पाई तार हिस्टेरेसिस कर्व आम तार हिस्टेरेसिस ग्राफ जो प्लॉट करथिबा से आम कौन जानिया पाइबा ता कर्सिव फोर्स, परमानेंट फ्लक्स डेंसिटी, एनर्जी दैट इज कंज्यूम्ड इन टेकिंग द मटेरियल थ्रू ए कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन ना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल आम केते एनर्जी से कंज्यूम करुच्ची से मटेरियलटा जो गोटे कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन को से गति करुच्ची से थ्रू आम से एरिया ऑफ दैट हिस्टेरेसिस लूप जान दे परिबा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 द मैग्नेटाइजेशन रिटेन्ड बाय द स्पेसिमेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिड्यूस्ड फ्रॉम सैचुरेशन वैल्यू टू जीरो। मैग्नेटाइजेशन रिटेन्ड हो गोटे स्पेसिमेन जो स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज करा से मैग्नेटाइजेशन रही जाऊँगी केतेबेले जिते मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिड्यूस्ड फ्रॉम द सैचुरेशन वैल्यू टू जीरो। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो तार सैचुरेशन पॉइंट कमे कमे आम जीरो करदेबा रही जाऊँगी ताकू कौन कहवा टेक्निकल टर्मटा हूँ रिटेन्टिविटी। रिटेन्टिविटी से रिटेन हो जाऊँगी से मैग्नेटिक मैग्नेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक वाटर एयर कॉपर सल्फेट लिक्विड एयर। एयरटा डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज हाईएस्ट फॉर क्या पे मैग्नेटिक परमेबिलिटी अधिक होची फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में अधिक आसी मैग्नेटिक परमेबिलिटी डाय पारा नुहे फेरो पे अधिक। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिलेटिव परमेबिलिटी रिलेशन के म्यू बारटा 1 प्लस जीटा रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। सेम रिलेशन आम पाइले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एयर इज एक एयर पर रिलेटिव परमेबिलिटी एक। The lagging of magnetic induction behind the magnetizing field is known as hysteresis। मैग्नेटिक इंडक्शन लैग करुच्ची माने तार कम रोचे मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो तार जो ग्राफ आम प्लॉट कर हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस द मोस्ट सुइटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट आ भर कौटा को आम परमानेंट मैग्नेट कर निकेल कॉपर स्टील सॉफ्ट आयरन स्टील को आम परमानेंट मैग्नेट को कन्वर्ट कर सहज हो। फेराइट्स आर conducting materials of square shape hysteresis loop na conducting materials of small area hysteresis loop, semiconductor of square shaped hysteresis loop, semiconductors of small area by hysteresis loop। ferrites का होची गोटे semiconductor of square shaped hysteresis loop। ऑप्शन नंबर सी। hysteresis सॉरी ferrites are conductors of square shaped hysteresis loop। एभली भाव समुदाय 55टा MCQ क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 सॉलिड स्टेट फिजिक्स कोर पेपर दुटा सेक्शन था एलिमेंटल लैटिस डायनामिक्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से गुड को आम गोटे पर गोटे डिस्कशन करने। फास्ट पार्टार 31 समथिंग क्वेश्चन थिला। प्रथम पार्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस 31 अप टू 31 फास्ट पार्ट थिला। तार द्वितीय पार्टा आरंभ है 32 रु आम चल जा 55 पर्यंत समुदाय रही आमर 55टा MCQ क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 रो। सो with this useful and informative notes let me wind up the session. Thank you.